प्यारे बच्चों, आज तुम्हें हम लेसन थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत शार्ट और लॉन्ग के क्वेश्चन कुछ लिखाए हैं। इन्हें लिख करके और याद करके आइएगा। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Second question, when and where was the Supreme Court of India established? Who was its first Chief Justice? In 1774, the Supreme Court of India was established at Calcutta for the judicial administration. Sir Elijah Impey was the first ex-Chief Justice. कौन? Sir Elijah Impey first चीफ जस्टिस इसके थे। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज ऑर्गेनाइज्ड ब्रिटिश सिविल सर्विस इन इंडिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज्ड द ब्रिटिश सिविल सर्विस इन इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कंपनीज आर्मी फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड? ड्यूरिंग द कर्नाटक वॉर द कंपनी वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड, या ऐसा भी लिख सकते हो, the company armies first organized in the Karnataka war. Long question का है, name the three pillars of British rule in India. How were they organized under the East India Company? The three pillars of the British rule in India as following. First है civil services, army and police. थर्ड है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी whose main purpose was to explore more and more markets so as earn profit. The Governor General adopted the policy of rapid expansion of the British Empire in India. They tried to establish administrative setup of the company, maintain peace, law and order in the country. Lord Cornwallis founded the administrative setup of the company on a firm footing. Civil services, the army, the police and the judicial organization were the main pillars of the British rule and were directly controlled by the Governor General in Council.